इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशनिंग मेथड क्या होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं और डायमेंशन हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग, ये दो चीज़ हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज़ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग क्या होते हैं? डायमेंशन आर यूज टू शो साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन फ्रॉम और अदर ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्ट। Method of dimensioning. There are two ways to write the number on dimension lines. Number one, align method. Number two, unidirectional method. The method of dimension दो टाइप का होता है, एक align dimension method होता है और एक unidirectional dimension method होते हैं। Align dimensioning method क्या होते हैं? In this system, the dimensions are indicated so as to be perpendicular to the dimension lines. Dimensions are placed at the middle and on top of the dimension lines. ये जो हमारा इमेज है ये अलाइन डायमेंशन मेथड से दिया हुआ है। नेक्स्ट, यूनिडायरेक्शनल मेथड। द यूनिडायरेक्शनल मेथड means all the dimensions are read in the same direction. Dimensions are placed in such a way that they can read from the bottom edge of the drawing sheet. Dimensions are inserted by breaking the dimension line at the middle. और ये इमेज से हमारा जो यूनिडायरेक्शनल मेथड से हमारा डायमेंशन दिया गया है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। सम इम्पोर्टेंट वे ऑफ प्लेसिंग डायमेंशन लाइन आर चेन मेथड, पैरेलल मेथड एंड कॉम्बाइंस मेथड। Chain dimensioning. Chain dimension is when each dimension is placed directly adjacent to the next dimension without any gap between the dimension. और जो आप देख रहे हैं chain dimensioning method है। Next, parallel dimensioning. Parallel dimensioning defined as when number of dimensions are measured in the same direction from the common feature. और ये आप जो देख रहे हैं ये पैरेलल डायमेंशन है। नेक्स्ट, कॉम्बाइन डायमेंशनिंग। व्हेन बोथ ऑफ द मेथड, फॉर एग्जांपल चेन डायमेंशन एंड पैरेलल डायमेंशन आर यूज्ड ऑन द ड्राइंग, द मेथड डायमेंशन इज कॉल्ड कॉम्बाइन डायमेंशन। ये हमारा कॉम्बाइन डायमेंशन का ड्राइंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।